One breach accused still on the run. Who is the intrusion mastermind? India Alliance corners Modi government. Parliament breach probe and politics. That is our top focus at 6 p.m. Prime. Good evening. You're watching 6 p.m. Prime here on India Today. I'm Akshita and over the next half hour, we're getting you all the latest updates to the Parliament security breach. From the investigation, where the accused now are currently the Patiala House Court, the Delhi police all set to seek maximum custody of the accused, to the politics that's playing out, that's led to an unprecedented 15 opposition MPs being suspended. We'll get you all the latest on the story. A look at the headlines first. Sensational details on Parliament security breach. 6 accused hatched the plan in 2022 through social media. Intruders Sagar and Manoranjan also held a Parliament recce. Fifteen opposition MPs suspended for disrupting House proceedings as India allies corner Modi government over Parliament breach. Raksha Mantri Rajnath Singh assures thorough investigation. Key Parliament breach conspirator Lalit still on the run. Last location traced to Rajasthan's Nimrana. India Today tracks down friend with who Lalit shared the breach video to. Parliament security breach prompts a security overhaul. Visitors gallery to be encased, full body scanners at the entry gates. The other big stories of the day. Big win for Hindu side in Mathura after Gyanvapi. Allahabad High Court allows survey of disputed Eidgah Mosque in Krishna Janmabhoomi Temple. And massive crowds continue to throng the Sabrimala Temple. War of words erupts as Congress hits out at left government for crowd mismanagement. The Kerala governor claims heavy rush to blame. And as we get you all the latest on the Parliament security breach, let's begin by telling you about the political showdown that we witnessed in Parliament today. In both Lok Sabha and Rajya Sabha, the opposition are up on their feet from the get-go, demanding an answer from Home Minister Amit Shah. So you had, in fact, in both houses, non-stop suspensions. TMC MP Derek O'Brien suspended from Rajya Sabha, and in the Lok Sabha, 14 MPs were suspended for not allowing the House to function. और भारत माता की जय की नारेबाजी आपको दिखाई देगी। महिला आप कौन है मैडम? क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? The biggest parliament security breach since the terror attack in 2001 has now sparked a showdown in the House, with the opposition trying to corner the Narendra Modi government. गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। The opposition disrupted proceedings in the Lok Sabha, demanding answers from Home Minister Amit Shah. Similar scenes played out in the Rajya Sabha as well. Hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the House immediately. What are you doing? In the upper house, TMC parliamentary party leader Derek O'Brien was suspended from the remainder of the winter session. Immediately. Having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the Council. Similarly, in the Lok Sabha, 14 opposition members of parliament, including Kanimore of the DMK and Manikam Tagore of the Congress party, were suspended. This House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and
Shri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolved that above-mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). The Modi government, while not giving in to the demands by the opposition for a debate and statement by the Home Minister, listed past instances of security breach. Sir, in the past also, many such incidents have been taken place. I am not comparing the past incidents, but we have to learn lesson from our past to bring the bright future. The government has urged the House to speak in one voice. In my opinion, this matter concerns us all, and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone on such issues. The opposition, however, is showing no signs of backing down. Sources say India bloc leaders will be seeking an appointment with the President Draupadi Murmu, that to raise the issue of the Parliament security breach. They are also demanding a joint parliamentary committee consisting of members with prior experience in policing, security and law to be set up to investigate the breach. इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है लगता है। हमको कहा गया था ये नया सदन बना ये कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। कौन है मैडम? The Bharatiya Janata Party, on the other hand, is pointing fingers at the opposition. The party's IT cell chief posted old images and videos of one of the accused, Neelam, taking part in the protests earlier, calling her an Andolan Jeevi and a supporter, allegedly, of the Congress party. Bureau Report, India Today. So 15 opposition MPs suspended in one day. One in Rajya Sabha, that's TMC MP Derek O'Brien, who faces perhaps more action because he refused to leave the House. And in the Lok Sabha, 14 MPs because they stormed the well of the House. And joining me live here on 6 PM Prime is DMK MP Kanimuri. She's also been suspended right now from Lok Sabha. Unprecedented, ma'am, what we've seen in the Lok Sabha, 14 MPs being suspended. But the reasoning they say is that your suspension is because you stormed the well of the House, which is unacceptable, that you went too close to the Speaker. No, today we were protesting because we wanted the Home Minister or the Prime Minister to come and give a statement in Parliament, and that's what they should have done. But the Union government behaved like, it was a everyday thing, and they wanted to continue with the discussions in Parliament, and they wanted to run the Parliament as usual without any statement or explanation about what happened yesterday. So when we protested, and especially the MP who had signed the pass to allow both the people who jumped into the House, he is there in Parliament today. But people who protested, for justice and to ask for an explanation and hold the government accountable. So you're holding, ma'am, you're holding the central government accountable. You want a statement from Home Minister Amit Shah. The government says, why are you demanding that the Home Minister speak on this? It's after all the Speaker who should say something. He ensures the security of the Lok Sabha and he's spoken on it. So they're accusing you of unnecessarily politicizing this entire issue. Well, there's no need for us to politicize it. We want to know why did the MP sign it, and what is the connection between the BJP MP and those two people who jumped, who breached security and came into Parliament?
There's no explanation about that. And how can you say the Prime Minister and the Home Minister are accountable for anything which happens within the country? How can we not hold the government accountable for it? Yes, it's the Speaker also. But Speaker hasn't given any statement as such. Okay. He said that he's asked for an inquiry. But what have they questioned the MP who signed the passes? Have they taken any action against the person? Have they suspended him? And nothing. He is there in Parliament, and whereas we who are trying to ask for an explanation So then, in a democratic country have been suspended. okay, so you're demanding that Pratap Simha also there be action against. But what, according to you, ma'am, would be an appropriate response by the government? Because they're saying, look, we're investigating. The Speaker has said that we're looking into this very gravely. So as per you, what should the government be doing here? I think yesterday the Home Minister or the Prime Minister should have come to Parliament and made a suo motu statement. And or at least today they were adjournment motions. They should have allowed a discussion, and one of them should have come to Parliament and replied to the discussion. Nothing happened. So it is the duty of the opposition to question and hold the government accountable for what happened yesterday. It is a serious lapse of security. Just because nobody got hurt, and just because they just had some kind of canisters with gas, doesn't mean that it's a very simple thing and it's a very normal thing. It is not. If you can jump from the gallery into the Parliament, then what kind of building is it that the entire planning doesn't include security? They have not thought of security. And if the House was full and the MPs had tried to get out of Parliament at the same time, there would have been a stampede when all the MPs were trying to get out. When two people can jump into Parliament, and it was the MPs who actually caught them. Sure. And marshals inside. The security was nowhere till, for a long time. So it is has a lot of questions which are unanswered, and I think it is a duty of the government to answer these questions. But now the result, ma'am, of the kind of protests that have been held in Parliament by you and several of your colleagues is that you've been suspended. So now how will you continue this fight? Because you can no longer be a part of the Lok Sabha proceedings for the remainder of the session. So there's no question of raising this now in Parliament. No, the leader of my party and the Chief Minister of Tamil Nadu has condemned the suspension. He said this is not democracy and undemocratic ways in which we've been suspended, and he said it has to be revoked. We will continue our protest outside the Parliament, and I'm sure the leaders inside the Parliament will continue the protest and ask for an explanation. All right. So Kanimuri there, one of the suspended MPs speaking to us here on India Today. Thank you, ma'am, for taking the time out and joining us here on India Today. Along with her, 13 others in the Lok Sabha alone who've been suspended. And then in the Rajya Sabha, you have TMC MP Derek O'Brien, who's now leading a silent protest over his suspension. And he's someone who refused to even leave the House once he was suspended, leading to the government also proposing that his case be sent to the Privilege Committee to see whether more action needs to be taken against him for failing to listen to the Rajya Sabha chairman. So all our drama really that we witnessed in Parliament a day after that security breach, because the opposition believes that the government hasn't taken this issue seriously. They're saying there's no question of proceedings continuing normally until our questions are answered. And they want the Home Minister, some of them saying the Prime Minister should also be there, issuing a statement in Parliament on what happened, what led to the security breach. I also want to bring in on this broadcast another member of Parliament who's been suspended now for his protest in the Lok Sabha today. Mr. Manikyam Tagore, Congress MP, is joining us on this broadcast. Mr. Tagore, good evening, sir. Vanakkam. Can you tell us what exactly happened, sir? Why have you been suspended? Vanakkam, good evening.
We were, as we all know, that yesterday's parliamentary security breach, and then today we have wanted the Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah, to make a statement in Sabha. As he is the in charge of security in the Delhi and the intelligence part also. And we had moved, I had moved personally, I had moved the adjournment motion for requesting the Home Minister to make a statement. We wanted Home Minister to make a statement. They suspended us. But can you tell me something, sir, Mr. Tagore? And this is what the government is saying. They're saying that the parliament security, the Lok Sabha Secretariat, all of that comes under the Speaker. The Speaker spoke on it yesterday, soon after the incident happened when Lok Sabha was reconvened. So they're saying, why are you putting the onus on the Home Minister that this is an attempt to essentially politicize it? Who is politicizing it? We are not politicizing it. BJP's Amit Malviya, yesterday night, started to politicize. We are still asking the Honorable Home Minister of India, Mr. Amit Shah, to come to Parliament and make a statement. When this kind of breach, security breach has happened, somebody has thrown gas and house into the Parliament because of the BJP MP's pass. No, I get it. It's very serious, sir. It's very serious. But the question is, who's accountable here? Is the Home Minister supposed to give a statement, or is the Lok Sabha Speaker supposed to speak on this? It is a security breach. It's a security breach and intelligence failure. We need to understand the intelligence agencies or works under the Home Minister of India. Home Minister is Mr. Amit Shah. For what is the harm in asking the Home Minister of India to make a statement? We are unable to understand. We are really, there is no words. When we say that we want the Home Minister to make a statement in the Parliament of India, when the Parliament of India is being attacked or a security breach is there, we are said that thing that no, Speaker will make a statement, that is enough, hear it and go away. Where we are heading? Really, are we a responsible democracy or we are something else? Why the Home Minister is afraid to come to the Parliament? I am unable to understand. Now, the other question is about the manner in which the opposition has protested. Do you think it was right, sir, or you're saying you didn't have a choice but to storm the well of the House? When you know it very well that in the morning I gave particularly adjournment motion. Particularly asking Honorable Home Minister to come to make a statement on the security breach, which is facilitated by a BJP MP. Therefore, we had asked for a statement. They were not ready for a statement. Then what else we do? We just be cheerleaders for them? We are opposition party. We have to ask responsible questions. When they wanted to bulldoze the opposition voices, they are suspending you. The greatest joke of the hour is this, that 14 MPs has been suspended. One among them is Salem MP, Parthiban, who has not come to Parliament today. And he is in Chennai. And he has been suspended. How? What he has done? This is the way the government is functioning. Government is making the Parliament a mockery. And the Parliament has become irrelevant in this for them. The Home Minister is not ready to come to Parliament. With your suspension now, and the opposition, of course, has every right to come out and say that this is what we demand, this is what we want from the government. How will you take that fight forward now? An unprecedented 14 MPs are now suspended from the Lok Sabha, including you, sir. We are very clear. India Alliance is very clear that we are united. We want the Home Minister to come and make a statement. We are told very clearly that we will continue to raise this thing. Tomorrow also we will raise it. Suspended 14 MPs will sit in Gandhi statue in front of the Parliament and we will protest. And other MPs will ask the same thing inside. We are 140 people are there. 14 SF has been suspended. Let them continuously suspend all the opposition MPs. Let them do this undemocratic thing which they have started in. The Modi government has completely lost its balance and they are just acting as if as an authoritarian way, and this is demolishing the democratic processes in India.
And it is unprecedented that 14 MPs, that also one MP who is not here in Delhi, has been suspended. Whether it has happened ever? New parliament, new rules. Now, Okay, so you're saying that tomorrow you will all be gathering, all the suspended MPs will be gathering at the Gandhi statue and taking forward your protest, demanding that the Home Minister speak on this. Mr. Manikyam Tagore, thank you for joining us here on India Today and telling us exactly what transpired. The opposition saying we're united, we're going to demand those questions, we're going to demand those answers essentially from the government, come what may. All right, big breaking news that's coming in on the investigation. 4 accused who are currently in the custody of the Delhi police have been sent to 7 days police custody. Now, even as the prosecution council now has sought more custody, they say 10 days are needed. Right now, the Patiala House Court has granted 7 days custody and has said that can be extended if required for 7 days. Remember that, in fact, the Delhi police maintained that they need to find the other missing link, which is the accused Lalit, for which custody of the current accused was necessary. They also said they needed more details of where their phones are, how they hatched this conspiracy. Now, in fact, based on this particular argument, the lawyer who was representing the accused said, take their custody for 3 to 4 days. Based on what they're saying, there's no need for more than that. But the reality is that now, with the Delhi police making strong arguments for custody, 7 days custody has been granted now to the Delhi police of the 4 accused. And then post that, if the cops need more, the court has said, approach us, we will extend the custody if needed. And that's all we have time for on this broadcast. Thanks very much for tuning in. Coming up on the other side is an exclusive conversation with cricketer Mohammad Shami that's breaking the internet. We'll get to an excerpt of that conversation from Agenda Aaj Tak in just a bit. For an immersive journey into the heart of news, politics and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp with the #1 election team as we gear up for the upcoming assembly elections. Scan the QR code. Join India Today now on WhatsApp. Follow these steps. Open WhatsApp on your phone. Check for a new updates tab. Select Find Channel and type India Today. After finding the channel, tap the Follow button. मॉर्निंग कंसल्ट के जो बहुत ताज़ा आंकड़े हैं वो दिखाना चाहता हूं, जिससे ये साफ हो जाता है कि 9.5 साल बाद भी डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जब उसकी तुलना हम दुनिया के बाकी नेताओं से करते हैं, तो ऐसी वो सीधी लकीर है कि वो टस से मस नहीं हो रही। क्योंकि 2 आंकड़े हैं हमारे पास। पहले तो ये देखिए कि ये है प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग, कितने लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए, कितने लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि खराब काम कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि खराब काम कर रहे हैं उनकी संख्या करीब 18% है इस वक्त, और जो लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं 76% पे हैं। 84 पीक थी, 63 जब एक तरीके से पैंडेमिक आया, उसके बाद महामारी के बाद लोगों में रोष था, तब असहमति का स्तर बढ़ा, लेकिन उसके बाद गिरता चला गया। क्या आप, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं डॉक्टर कुमार, क्या आपने कभी इस तरह की चीज़ देखी है हाल के राजनीतिक इतिहास में? कोई नेता जिसकी लकीर, क्योंकि बाइडेन के भी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी रेटिंग घट गई है। वो भी आंकड़े हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है नरेंद्र मोदी 76% पे सबसे ऊपर, उसके बाद है ओब्राडोर मेक्सिको के 66%, बसेट स्विट्जरलैंड के 58%, लूला ड सिल्वा 49%, ये जो बाइडेन बेचारे 37%, पेड्रो सांचेज स्पेन के 37%। ये नंबर 1 क्यों आ रहे हैं बार बार मोदी जी? देखिए राहुल, जब हम देश में सर्वे करते हैं और उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई दिखाई पड़ती है, तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि एक तो उनके काम को लोग सराहते हैं, उसके कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं, और दूसरा जिसका जिक्र संदीप शास्त्री कर रहे थे कि मजबूरी का मतलब कोई विपक्ष में नहीं है, उसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है। India's new parliament intruded by 2 men.
the country's biggest security breach on the anniversary of the 2001 Parliament attack. This issue of national security has predictably been hijacked by political point scoring. The India Alliance party staged a walkout in Rajya Sabha. The Congress is now demanding a statement from Home Minister Amit Shah. Congress party workers protested outside the residence of BJP MP Pratap Simha's residence in Mysuru. One of the intruders, Sagar Sharma, was carrying a visitor pass issued by the BJP MP. The TMC has called the Lok Sabha security breach an insider job, accusing the BJP of facilitating the attack. The party is also demanding the expulsion of MP Pratap Simha. वोटर ने ये तय किया है कि उसके वोट से जब वो वोट करने जाती है तो सिर्फ अपना नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तय करती है कि देश में क्या होगा। तो सबसे पहले सुनीता दुग्गल जी, 27 साल पहले वो सितंबर का महीना था जब 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल आया था और 27 साल बाद 21 सितंबर को वो पास हुआ यूनानिमसली, सबने समर्थन किया। कई सारे किंतु परंतु लगे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो पास हुआ। जितना श्रेय आपको जाता है उतना ही श्रेय क्या सभी को जाता है, क्योंकि सबने मिलकर इस बार सुनिश्चित किया, यूनानिमसली पास कराया उस बिल को। सबको श्रेय जाता है या सिर्फ बीजेपी को? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। देखिए, ऐसा है कि फाइनली ये डिसीजन किसने लिया, फाइनली ये निर्णय किसने लिया, फाइनली एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके लिए लाया गया, क्योंकि देखिए हमने ये माना कि विमेन जो है वो स्पेशल हैं, इसलिए स्पेशल सेशन जो है हम विमेन के लिए लेकर आए, इस रिजर्वेशन बिल के लिए लेकर आए। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि यूनानिमसली ये हुआ, तो इसलिए अनडाउटेडली कि सबने इसमें जो है अपना योगदान दिया, सबने यस किया। एक भी आई थिंक सिर्फ शायद एक, अभी भी एक कोई शख्स ऐसे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोटिंग किया, लेकिन सबने इसके फेवर में वोटिंग किया। तो नेचुरली के सबने इसमें हाँ भरा, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सबने सबका इसमें योगदान है। अमी बहन जी, किंतु परंतु पर बाद में जाएंगे, पहले 27 साल बाद हुआ। कितनी खुशी है महिलाओं में, मतलब पॉलिटिकल लाइन को अगर छोड़कर भी चर्चा करें, ये जरूर लग रहा है कि अभी शायद अगले 5 साल ये नहीं होने वाला है, बट एक खुशी है कि चलिए पास तो हुआ। नहीं, खुशी तो बहुत है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो पहले महिला दिखती नहीं थी वैसे, पर अब आप पंचायती राज की वजह से अगर आप देखेंगे तो सरपंच मिलती है महिला, वो चुनाव लड़ना चाहती है, वह बोलना चाहती है गांव में, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल उनको देख देख के यंगर जनरेशन भी आता है, तो वो डिफरेंस मैंने देखा। उसको भी समय लगा जब आया था तब। तो आज खुशी है कि चलो अभी हाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी महिला आ सकेगी।
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. मोहम्मद शामी, आप सबके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या ही कहूँ, आप लोग स्टार्ट करो फिर मैं बोलता हूँ। आइए। आपकी आवाज में तो मुझे थोड़ा दर्द दिख रहा है अभी भी। वो है अभी भी वर्ल्ड कप हारने का, फाइनल हारने का? हाँ यार, क्योंकि जिस दिन से घर पे आए हैं वही एक टॉपिक है, घर में भी, दोस्तों में भी, जो लोग मिलने आते हैं उन लोगों में भी, तो वो चीज़ रिपीट होती रहती है हमेशा। तो लगता है ऐसा यार कि बहुत करीब थे। लेकिन आखिरी उम्मीद मोहम्मद शमी ही थे उस दिन भी। अगर आप फाइनल में भी देखें, जो आपने आगे 2 विकेटें ली, क्या उस वक्त एक्चुअली लग रहा था कि यार 240-41 में भी जीत जाएंगे? अगर सच पूछते हो तो जैसे हम लोगों ने 3 विकेट शुरू में निकाल लिए थे, तो उस टाइम पे एक मतलब कॉन्फिडेंस था कि अब हमारा 1 विकेट और निकालना है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यहाँ से 1 या 2 विकेट हमारे स्पिनर्स निकाल कर ले जाएं तो गेम हमारा है। फिर वो शायद वर्ल्ड कप लिखा नहीं था। नसीब की होती है, आप मेहनत कर सकते हैं, देने वाला तो ऊपर बैठा है। अच्छा, आज ही कप्तान रोहित शर्मा ने बोला, उन्होंने कहा कि फैंस के लिए उन्होंने बोला कि मैं बड़ा सॉरी फील करता हूँ। उन्होंने कहा दिल तो मेरा भी टूटा। उन्होंने कहा अभी तक नहीं जुड़ा है, पर उन्होंने कहा कि यार कोशिश बड़ी की टीम ने, लेकिन एन वक्त पर आकर हमने आप सबको लेट डाउन किया। हाँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप का जो जर्नी रही है हम लोगों की डे 1 से, जो गेम शो किया है, जो एफर्ट दिखाया है लड़कों ने, वो पूरे इंडिया ने उसको मुझे लेकर एंजॉय किया है। और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद एक 0%, 0.001 में भी कोई शायद ऐसा निगेटिव इंसान मिल जाए कि जो ये कह दे कि वर्ल्ड कप इंडिया का नहीं होगा। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिल को भाई थी कि हर इंसान ने दिल से वर्ल्ड कप को देखा, दिल से सपोर्ट किया। उसके लिए हम हर एक बंदा थैंक्स बोलता है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। अच्छा, उस दिन, वो शाम, वो रात हम सबको याद है। एक तस्वीर और मेरे पीछे, मैच खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, सबसे ज़्यादा तो कहते हैं कि वो 15 खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए। पहले वो तस्वीर आप देखिए। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। हमें याद कीजिए ये। एक्चुअली मैं उनको मतलब एक ज़ोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। हम लोग, पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं, टूटे हुए दिल से हैं। मतलब इतना 2 महीने की मेहनत, इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं, और एक दिन पर डिसाइड हो गया, एक शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो, उस पर सब डिसाइड हो गया। उसके बाद सारे, आपको पता ही है, हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब पीएम आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा, हेड हाई करना होगा उस टाइम पे। क्योंकि एक सरप्राइज़ टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं। सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी, खा नहीं रहे थे। मतलब कोई बात करना की कोशिश भी नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बैठे थे एक टेबल पे कि हुआ क्या। ऐसा सरप्राइज़ सा था हम लोगों के लिए। तो सडनली सब देखकर शॉक हो गए थे एकदम से। फिर आए, मोदी जी ने बात की, और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से मतलब
कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से 1 by 1 बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो ज़रूरत थी शायद उस टाइम। अच्छा, ये तो मैं ड्रेसिंग रूम की आप पता नहीं बात बताना चाहते कि नहीं, बट अक्सर इस तरह की कोई बात हो तो कहते हैं ना, मर्द भी जो है वो बच्चा ही होता है। कई खिलाड़ी मैंने सुना रोए भी थे, आप भी थे उनमें से एक? हाँ थे, क्योंकि यार हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स दोबारा ना खेल पाएँ वर्ल्ड कप, या उस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो जो हैं। हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ, कोई भी हो सकता है उसमें। लेकिन एक चीज़ ऐसे होता है ना कि एक चीज़ सामने रखी है बिल्कुल आपके, और वो आपके हाथों के आगे से चली जाए, ऐसे लग रहा था उस टाइम। तो आंसू से तो सबके पास थे। बड़ा मुश्किल था वो दिन हम सब के लिए भी। लेकिन शमी, आपके लिए वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, वर्ल्ड कप की शुरुआत में तो मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे। सुरेश रायना आज तक पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने आपको, वो कहीं मिले होंगे तो उन्होंने आके बताया कि पाजी शमी ना अंदर से बहुत भरा हुआ है। आपने शायद उनको कहा था कि जिस दिन मौका मिला ना तो मैं भगा भगा के मारूंगा। यार देखो, मैं हमेशा, सब कहते हैं कि यार मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि टीम को कब मेरी ज़रूरत है, कब मैं टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पे होता हूँ, वो चीज़ों का वेट करता हूँ। कभी मैंने कंप्लेन नहीं की है। तो कई सारे लड़कों से बात हुई थी जो साथ में हैं, दोस्त भी हैं, साथ में खेले भी हैं, मायूस तो नहीं है, या फिर वो वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि डोंट वेरी नंबर आएगा ये, क्योंकि सबको पता है कि जब जब मैं क्रिकेट के लिए मैं ग्राउंड पे उतरा हूँ, मेरे से बेटर मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं 100% दूंगा। मैं अपने आप को बेस्ट मान के ग्राउंड पे उतरता हूँ। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था आपका, न्यूजीलैंड वाले मैच में कमबैक हुआ। वो सवालों के जवाब मैंने हाँ वैसे ही दिए थे जैसे उन लोगों ने बोला है कि हाँ यार जिस दिन मिलेगा ना उस दिन बताऊंगा मैं इनको। लेकिन अच्छा हुआ सब कुछ। फिर वही बात आ जाती है कि लास्ट में वो सामने से जाता हुआ दिखता है, तो वो फिर बहुत अपसेट होता है। एक सुनहरा मौका था, और आपके ड्रेसिंग रूम में 2 खिलाड़ी ऐसे थे भी जो 2011 वाली जीत का हिस्सा थे। तो कभी कभी होता ना ऐसे, आप वो उस सपने को 4 साल बिल्ड करते हैं, फिर वो 2 महीने आते हैं, और फिर बात होती है यार 2011 की रात ये हुआ था। श्वेता यहाँ पे बैठी हैं, ये कवर करने भी गई थी मुझे याद है, और सारी रात आई थिंक खिलाड़ी उस वक्त जश्न मनाते रहे। लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ जाती है हमेशा? ये पिछले कई साल से हमने देखा है कि वो कोई नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहां पर हम रह जाते हैं। दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को हो कि प्रेशर तो हर किसी को होता है यार। जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होता है। जब आप एक अच्छा मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो प्रेशर तो हर जगह होता है। आज को मैं भी बोल दूं कि हाँ मुझे प्रेशर नहीं था या नहीं था, प्रेशर सबको होता है, प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, प्लान सबके होते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम शो नहीं करते हैं कि हम कितने प्रेशर में हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स प्रेशर में रहते हों, या फिर हो सकता है कि हमारा डिसीजन कुछ गलत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें टॉस पे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब डे नाइट मैच होते हैं तो बहुत चेंजेस होता है। जब दिन में हम बॉल करते हैं और रात को जब हम बॉल करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी, अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने विकेट चूज़ किया, अब जो सुनने में आ रही हैं बातें कि हमने गलत विकेट चूज़ किया, कि नहीं यार, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार रन थोड़े से कम रह गए। तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि अब ये हमारे लिए यही बेस्ट है। तो कोशिश उसी में कर रहे थे। तो डे 1 से हमारा यही है, जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे और हारेंगे भी तो एक साथ हारेंगे। हम जब फाइनल में आए थे, हमारा एक ही मूड था, सब एक साथ हैं, किसी को कोई ब्लेम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आज तक अच्छी क्रिकेट खेली है, आज भी अच्छी खेलेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। शायद लक नहीं था या बैड डे कह सकते हैं। आप 15 वर्ल्ड कप में भी थे, 19 में, 23 में, लेकिन इस बार दुनिया ने, पूरी दुनिया क्रिकेट ने ये कहा कि भाई इंडिया के पास जो पेस अटैक था वैसा किसी ने देखा। और इतना खौफ 70s में वेस्ट इंडीज हो या उसके बाद की ऑस्ट्रेलिया हो, इतना खौफ तो वाकई में कभी किसी वर्ल्ड कप में किसी बॉलिंग लाइनअप का नहीं था। वो चीज़ यार मुझे भी फील हुई, क्योंकि जब से हम पैदा हुए, जब से यही सुनते आ रहे थे कि इंडियन बैटिंग ऐसी है कि किसी के पास नहीं है, हम यही सुनते आते थे। और वो हकीकत भी थी
क्रिकेट में इंडिया की क्रिकेट को जानते थे लोग, बैटिंग के नाम से जानते थे, बैटिंग के लिए जानी जाती थी कि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पिछले 7-8 साल में जो हम क्रिकेट खेले हैं, वो क्रिकेट और जो इस वर्ल्ड कप में खेली है, मुझे लगता है कि 80% पब्लिक ने एंजॉय किया होगा हमारी जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी। क्योंकि लोग ग्राउंड पे भी मैंने चिल्लाते हुए लोग सोचे हैं कि उसको बोल दो, इसको बोल दो, मतलब एक अलग ही माहौल था यार कि क्या बोलते हैं उसको, कि नेक्स्ट लेवल आप इमेजिन, कि मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे खून ऐसे पंप होता था कि हाँ यार अब मैं जाके करूँगा। तो वैसा होता था जब, क्योंकि पब्लिक एंजॉय कर रही थी बॉलिंग। क्योंकि हम लोगों ने अगर 250 बनाए तो 150 में आउट, हमने 300 बनाए तो 200 में आउट, हम जान ही नहीं दे रहे थे। तो बॉलिंग एंजॉय कर रहे थे सब लोग, क्राउड ने भी बहुत एंजॉय किया और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेटें ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेस भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था, क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ 400 भी बन जाएंगे। अगर आपके पास 60 बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है। तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम, जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है, वो भी बना सकती है। और जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है। कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी। आपने कैच छोड़ा? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों साइड खेल रहे थे, बहुत ज़रूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था। मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चलो, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था। और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए ख़राब रिएक्ट किया हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी। जब मैं रनअप पे था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूँगा। मेरे एक ही चीज़ दिमाग में थी, क्योंकि कैच मेरे से छूटा था। मैंने सोच लिया था, मैंने चाहे जो हो जाए, इन 6 बॉलों में जी अब तू 3 छक्के मार या भाई अपना विकेट दे के जाएगा। विकेट दे के नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश 6 बॉलों में करनी थी। जब 3 छक्के मार खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूँगा, तो मुझे विकेट लेना ही है, किसी भी कंडीशन में मुझे विकेट चाहिए था। वो शायद मेरे हाथ में ये गेंद है, ये स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है, कहीं अलग से बनती है। ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है, हाँ? लेकिन जब इसका सवाल आया था, हाँ इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था। वसीम अकरम, हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज़ करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। 4-6 बॉल होती, चूज़ कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े? मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा दब जाए इसमें।
डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, ये बहुत ख़राब चीज़ है ये, मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया, इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा, मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे किए तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। India's new parliament intruded by 2 men. The country's biggest security breach on the anniversary of the 2001 parliament attack. This issue of national security has predictably been hijacked by political point scoring. The India Alliance party staged a walkout in Rajya Sabha. The Congress is now demanding a statement from Home Minister Amit Shah. Congress party workers protested outside the residence of BJP MP Pratap Simha's residence in Mysuru. One of the intruders, Sagar Sharma, was carrying a visitor pass issued by the BJP MP. The TMC has called the Lok Sabha security breach an insider job, accusing the BJP of facilitating the attack. The party is also demanding the expulsion of MP Pratap Simha. Kumar Danish Ali, you raised a very pertinent point. You said no protocols in this parliament, whether for a pass or a password. What are your apprehensions, sir? See, Gaurav, one thing, this new parliament building was built in a hush-hush manner. No protocols, no security experts or the facilities there for the members or the staff or the media people. There are a lot of complaints. I don't want to go into that detail. But what happened today is a serious breach of security. Nobody can deny it. You can
somebody can blame somebody. This is not the issue. Who is responsible for the security of this country? Who is responsible for the security of the elected representatives, like parliamentarians? If the Parliament of India is not secured in the hands of the present regime, then what else is secured? That's the basic point. Ma'am, we used to joke that during Corona, all of us became doctors. We learned so much about medicines. Now with the space missions, all of India, it's as if everybody is interested in the smallest detail that's going on. Does that put a pressure on you with a mission like Aditya L1, which is so difficult, even if we talk about international missions? Yani, I'll also translate my question. क्या इससे आदित्य L1 जैसे मिशन के साथ आपके ऊपर दबाव पड़ता है ज्यादा, क्योंकि दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा? Yeah. It's no pressure at all, but always it gives us more responsibility. That nation is looking at us at every detail, so we should be more responsible and give more to the nation. And we are very happy that we could inculcate some scientific temperament in the younger generation watching the space missions. So that way we are happy with it gives us energy to do more and more missions and more laurels to the country. Finds a parallel in India's real-life political arena. As tax investigators seize an astonishing 351 crore rupees from properties associated with Congress MP Pratap Simha in Odisha. Prime Minister Narendra Modi shared the BJP's biting video meme ridiculing Congress as the orchestrator of actual money heists. Infused with the Netflix blockbuster's iconic theme song, I Don't Care At All. If I stay with you, if I'm true. Good morning. Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. Last year, around the same time, when